Good morning to all of you. Am I audible, visible to all? Is this clear? Is this clear to everyone? Audible, visible? Hello, very good morning, Swapna. Okay, ठीक अच्छे. आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऊपर हमें डिस्कशन करबा. ये एथिक्स रो गोटे पार्ट. एथिक्स सिलेबस रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऊपर हमें आज डिस्कशन करबा. ता पूर्व केमती चलची समस्त प्रिपरेशन? हाउ आर यू ऑल? Good morning, Rajeshwari. Very good morning. Very good morning, Mani. Yes. Now all are present. केमती अछंती समस्ते? So after again a long period of time, we are having this session, answer writing session. Last Friday करथिले ना? Last Friday थिला हमर session. 1 week 7 दिन भितरे सिलेबस केते कवर होइछ? पढुचनी समस्ते? तो ये एग्जाम बहुत भास्ट सिलेबस पढ़िया को पड़ियो, सिलेबस कंप्लीट करिया पई पड़ियो. चलो ठीक अछि. और आजिरो कांसेप्ट अछि, टॉपिक ऑफ डिस्कशन अछि फाउंडेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इन पब्लिक सर्विस. यार ऊपर हमको डिस्कस करिवार अछि. ये एथिक्स सिलेबस जोटा अछि आपनकर एथिक्स सब्जेक्ट, एथिक्स जीएस पेपर 4 की तार गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक. मो ऑलरेडी डिस्कशन करिछि, पूर्वरु जो एथिक्स देखुचे हमें एटी ना दि तीनटा इंपोर्टेंट सब्जेक्ट मिसी की एथिक्स क्रिएट हेछि. कोन क्रिएट हेछि? गोटे हला फिलोसॉफी मोस्ट इंपोर्टेंट. कोन कहली? फिलोसॉफी. आ गोटे हला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. आ गोटे हला जूरिस्प्रुडेंस. एटा हला आपनकर एथिक्स. ये मिसिला पर एथिक्स क्रिएट हेछि. Now, philosophy, public administration, these are branches of humanities everyone knows, and jurisprudence, it belongs to law. ये होची लीगल थ्योरी को jurisprudence कहा जाए. कौन कहती? लीगल थ्योरी को jurisprudence कहा जाए. Very good morning, Snehalata. Swapna, I am good now, almost good. तो এই पार्ट को हम एथिक्स कहूचे. ये तीनटा सब्जेक्ट रो किछि बेसिक कांसेप्ट हमको बुझिया पड़ो. सबुठो अधिक कांसेप्ट हमको बुझिया पड़िबो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तापरे जूरिस्प्रुडेंस रो किछि बुझिया पड़िबो. तापरे फिलोसॉफी रो किछि कांसेप्ट बुझिया पई पड़िबो एथिक्स बुझिया पड़िबो. ताले कोन कहली हमको कोन इंपोर्टेंट हम पई फॉर एथिक्स पेपर 4 रो बेटर आंसर राइटिंग करिया पई हमको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो किछि इंपोर्टेंट कांसेप्ट बुझिया पई पड़िबो. हैला. एवं जो फाउंडेशनल वैल्यूज हमें देखुचे, फाउंडेशनल वैल्यूज इन सिविल सर्विस. नाउ व्हाई इज इट इंपोर्टेंट? आज हमें कोन डिस्कस करबा? हमें डिस्कशन करबा आज अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट फेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. पॉजिटिविज्म रे कोन हला, न्यू पॉजिटिविज्म रे कोन हला, एनपीए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे कोन हला, एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट रे कोन हला. ई सब पॉइंट मानक ऊपर हम आज डिस्कशन करिया. तो स्टार्ट करिया पूर्व दिस इज अ कोटेशन गिवन बाय थॉमस पेन. So, society is produced by our wants, government by our wickedness. The former promotes our happiness positively by uniting our affections, the latter negatively by restraining our vices. The one encourages intercourse, the other creates distinction. The first is a patron and the last is a punisher. ये दीटा कथा. Society and government कहाँ पर फोकस करा होती है? Society and government. What is the relationship between society and government?
सोसाइटी इज फॉर द पीपल सोसाइटी कहा सोसाइटी ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल इट मीन्स इट इज ऑल अबाउट द पब्लिक ह्यूमन और पब्लिक ना गवर्नमेंट दिस इज द व्हिच प्रोवाइड्स गवर्नेंस ये कौन करछि ना ये गवर्नेंस प्रोवाइड करछि तो सोसाइटी ये कुछ सोसाइटी प्रमोट्स हैप्पीनेस पॉजिटिवली बाय यूनाइटिंग आवर अफेक्शंस गवर्नमेंट नेगेटिवली रिस्ट्रेन्स आवर वाइसेस डेफिनेटली गवर्नमेंट पुट्स डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन अस केमिति हमें आगो पढ़िले बे जानिबा सो ए कोटेशन टा मन रखिबे जदि एग्जाम रे आसे लिखिबे केमिति यूज होछि हम देखिबा नाउ लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहला हम कोन बुझे पब्लिक रो अर्थ कोन पब्लिक रो अर्थ दिस इज द पीपल और दिस इज द सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन अर्थ कोन बा पब्लिक रो अर्थ मु कहबी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कोन ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स इज कॉल्ड public administration because it is ubiquitous and integral part of our modern lives ubiquitous means it is present everywhere it is the part of our modern life without public administration we cannot think about good governance now it is ଦି तीनटा concept कहूची ठीक है मन रखन कोन कोन गोटे हला गवर्नमेंट गोटे हला गवर्नेंस आ गोटे हला गुड गवर्नेंस हला आ गोटे हला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गोटे हला ई गवर्नेंस ये कांसेप्ट गुडा टिके बुझिया जरूरी हम पई प्रथमे देखिबा गवर्नमेंट कोन ये को टाइप रही पारे ये मोनार्कियल फॉर्म होई पारे बा यार ऑब्जेक्टिव कोन यार ऑब्जेक्टिव होची टू प्रोवाइड गवर्नेंस गवर्नेंस प्रोवाइड करबा होची यार ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड गवर्नेंस ना व्हाट इज गवर्नेंस कोन ना गवर्नमेंट जहां करे गवर्नेंस व्हाट गवर्नमेंट डज इज कॉल्ड गवर्नेंस कोन लिखिबा एटी व्हाट गवर्नमेंट डज इज कॉल्ड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस कोन दिस इज द पीपल सेंट्रिक अप्रोच पामु कहबी दिस इज ऑल अबाउट द पब्लिक satisfaction public administration कौन the management of government affairs e governance कौन governance through ICT mode information communication technology को यूज करके जेतबेले गवर्नेंस प्रोवाइड करा जाउची ता को जाउची ई गवर्नेंस बुझेला ये इंपोर्टेंट कांसेप्ट ये सब गुडा काम लागिबे धीरे धीरे बर्तमान सब गुडा काम लागिबे केमति लागिबे हम देखिबा तले कोन कहूची पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव कोन ना ये कहूची फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव जेमति हम देखुची देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ये कोन क्रेडल टू द ग्रेव रो अर्थ मातृ गर्भरु आरंभ करके ये श्मशान पर्यंत देयर आर डिफरेंट स्कीम्स समस्त जानिथिबे ममता स्कीम अछि पोषण स्कीम अछि फॉर द लैक्टेटिंग मदर और फॉर व्हेन द it is inside the fetus तले in the mother's womb मातृ गर्भरे अछि हरिश्चंद्र स्कीम अछि गोटे सुनिथिबे जो जे कोन कहूची एते गोटा लास्ट तांगर फ्यूनरल एक्टिविटी गोटा कंडक्ट करे ता माने these are गवर्नमेंट पॉलिसीज जे जन्म रु मृत्यु पर्यंत हमको गाइड करछि इन द सेम वे हम कहूचे व्हाट इज रिक्वायर्ड ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इवन इफ विल गो थ्रू द गवर्नमेंट scheme by government rules every birth and death that needs to be registered with the government birth एवं death रो registration हमको करिया तले हम कोन देखिले people citizen centric बा government affairs को हम कहूचे administration कोन कहूचे administration नाउ एबे क्वेश्चन कोन एठी हम फोकस करछे कहा परे ना एठी हम फोकस करछे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे व्हाट आर द एथिकल कंसर्न्स इन 20th century ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट इवॉल्व एज अ डिसिप्लिन ग्रेजुअली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम दुई भाग रे डिस्कशन करि परिबा कोन कोन ना गोटे हला public administration as a distinct discipline आउ गोटे public administration as a practice distinct discipline माने कोन जेमति हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स देखो तो सेमति ये कुछ public administration एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो एकेडमिक्स रो कथा कुछ बीए एमए एमफिल पीएचडी ए कथा कहै छै एकेडमिक्स बाइट हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कथा कहै
एज अ प्रैक्टिस एटी हम ऑफिसर मानक कथा कहूचे एडमिनिस्ट्रेटर मानक कथा कहूचे आईएएस मानक ओएस मानक कथा कहूचे सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गोटे डिसिप्लिन भी एवं गोटे प्रैक्टिस तो ग्रेजुअली ये डेवलप होइची इट कम्स फ्रॉम द ओरिजिन बाय मदर डिसिप्लिन जदि हम देखिबा दिस इज पॉलिटिकल साइंस ये डेवलप होइची तो ये डेवलप होला 20th सेंचुरी को आसुची ता पूर्व को जीवा दरकार नहीं दैट विल बी अ पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल तो हम कोड एथिक्स को एठी कन्फाइन करबा डिस्कशन को 20th सेंचुरी रे जदि हम देखिबा पॉलिटिकल इकोनॉमी बा रूरल सॉरी मोरल फिलोसफी कोन यार ना ये कुछ इट इज हैज टू फोकस ऑन द पॉजिटिविज्म कौन पॉजिटिविज्म ये कहूँ इट इज अ मॉडल ह्यूमैनिटीज एंड नेचुरल साइंस यार ऑब्जेक्टिव कौन यूनिवर्सल लॉ ये कहूँ इन अकॉर्डेंस विथ द यूनिवर्सल लॉ कौन कहली इन अकॉर्डेंस विथ द यूनिवर्सल लॉ तो जब हम देखिए प्रोडक्शन कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट कोडो नहीं ताको किए रेगुलेट करिवो ना दैट विल बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ताको रेगुलेट करिवो एटा हम देखिले पॉजिटिविज्म नाउ नियो पॉजिटिविज्म बा लॉजिकल पॉजिटिविज्म कोन ना ये कहूची इट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल लॉज इट इज बेस्ड ऑन आसीबा व्यस्त होबनी जो फिलोसॉफिकल टर्म गुडा को देखि व्यस्त होबनी धीरे धीरे बुझिबा कोन ये कहूची ना नियो पॉजिटिविज्म कहा पर फोकस करची बा हर्बर्ट साइमन एटी कहा पर डिस्कशन करची ना वैल्यू फ्री साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सो वैल्यू फ्री रो अर्थ कोन वैल्यू फ्री साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यार अर्थ कोन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स दे हैव टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटी बाय अ इन अ वेरी आम कहवा कि सेठी वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच कौन कहले वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच अर्थ देयर इज नो बायसनेस किछि बायसनेस रहिबनी देयर इज नो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन मते गोटे जिंस कहले वर्तमान एडमिनिस्ट्रेटर मानक पाखरे पॉलिटिकल इंक्लिनेशन देखिया को मिलुची ना मिलु नाही आईएएस ओएस ऑफिसर्स से माने तांको ड्यूटी डिस्चार्ज करछने टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और नॉट यस और नो खाली कहबे टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी वेदर दे आर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी और नॉट यस और नो हाउ टू डेफिनेटली आंसर इट यस आसीबो तो एटा हम वैल्यू न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर डिस्कशन करछ का ऊपर वैल्यू न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर डिस्कशन करछ तो ये कहूची एटी जो माने एडमिनिस्ट्रेटर से माने मॉडल सिटीजन कोन माने मॉडल सिटीजन अर्थ एमानक पई कोड ऑफ कंडक्ट सेपरेट दे आर मॉडल सिटीजन फॉर अदर्स अन्य मानक पई माने रोल मॉडल नहीं सेति पई दे आर रेगुलेशन और देयर बिहेवियर इज रेगुलेटेड बाय डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट नाउ पब्लिक प्लेस रे जदी जने सिविल सर्वेंट कोनोसी प्रकार अनसोशल एक्टिविटी करछन्ती एंटी सोशल एक्टिविटी करछन्ती बा प्रमोट करछन्ती लिकर कंजम्पशन को प्रमोट करछन्ती स्मोकिंग को हेलमेट न पिंधि ड्राइविंग करिया को देन देयर इज अ पनिशमेंट फॉर दैट एंड दैट पनिशमेंट इज ग्रेटर मोर एज कंपेयर टू द सेम क्राइम और रॉन्ग कमिटेड बाय अ जनरल ह्यूमन बीइंग इन द सेम वे जदि म कुछ ग्रेव ऑफेंस मानकर कथा कहबी फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट कस्टोडियल मोलेस्टेशन जेतेबेले कस्टोडी रे अछंती खार गवर्नमेंट ऑफिसर मानकर से समय जदि हम देखिबा पनिशमेंट व्हिच इज प्रोवाइडेड टू देम दैट इज अ ग्रेटर extent as compared to if it is done by a general man अपेक्षा से मानको अधिक पनिशमेंट एटी प्रोवाइड कर जे why because they are model citizen so से मानको बिहेवियर जदि हम देखिबा बिहेवियर टा पब्लिक बिहेवियर करबा दरकार तो एटी हमको तापर देखिया को मला एनपीए वैल्यू न्यूट्रलिटी को रिजेक्ट कला एनपीए कहला कि रोल ऑफ वैल्यूज एंड एथिक्स कोन कहूची ना रोल ऑफ वैल्यूज एंड एथिक्स काहे कि ना ये रोल ऑफ वैल्यूज एटी जो हम देखुचे वैल्यू फ्री साइंस रे हम कहा ऊपर फोकस करछे इट इज ओनली बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मते को रूल एंड रेगुलेशन इंपोर्टेंट ना वैल्यूज इंपोर्टेंट एथिक्स इंपोर्टेंट इमोशनल क्वेश्चन इंपोर्टेंट ट्रांसपेरेंसी इंपोर्टेंट कोगुडा को इंपोर्टेंट आपण गोटे ऑफिसर अछंती 5टा बेले गोटे विंडो क्लोज होवार अछि 5टा परे गोटे एजेड लोक आसिक पहुंचती कि मो पेंशन टाको एक्सेप्ट कर 5टारे पेंशन पई आउ भत्ता पई मन करा एक्सेप्ट करा जिवो 5टा इज द लास्ट टाइम 5:15 रे आसिक जणे पहुंचुची से कहूची कि मो दूर रु आसीची रास्ता नाही हैरान रे आसिक पहुंची नाउ यू विल एक्सेप्ट और नॉट कोन आर आंसर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर तहसीलदार बीडीओ हिसाब रे कलेक्टर हिसाब रे आपण एक्सेप्ट करिवे ना करिवे नै ना जदि एक्सेप्ट करू नाहंती देन यू आर बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ
positivism जोटी यू फोकस ओनली ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन जदि एक्सेप्ट करूचंती से जगह हम कहबा कि एठी वी आर गिविंग इंपोर्टेंस टू वैल्यू बुझिला वैल्यू न्यूट्रलिटी कोन एवं वैल्यू बेस्ड कोन सो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू न्यूट्रलिटी को रिजेक्ट करूची एवं कहूची कि वैल्यूज हैव मोर इंपोर्टेंस कोन कहूची वैल्यूज हैव मोर इंपोर्टेंस जदि एडमिनिस्ट्रेटर हबा को चाहुचंती ताले आपन को इमोशनल क्वेश्चन सहित इंटेलिजेंस क्वेश्चन सहित इमोशनल क्वेश्चन रा आवश्यकता अछि एफिशिएंसी इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी एथिक्स रो मध्ये आवश्यकता अछि ताले कोटा बेटर मते कहले एटी लॉजिकल पॉजिटिविज्म टा बेटर ना एनपीए टा बेटर व्हिच इज बेटर सिंपल बहुत सिंपल कौन करवा कोटा बेटर नियो पॉजिटिविज्म टा बेटर जे केवल रूल रेगुलेशन ऊपर फोकस करूची ना न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टा बेटर जे रूल रेगुलेशन सहित वैल्यू ऊपर फोकस करूची ऑब्वियसली एनपीए टा बेटर नाउ एनपीए देयर आर डिफरेंट स्कॉलर्स एमान को फिलोसोफर कुआ जाए लाइक डुइट वाल्डो फ्रैंक मेराइनी से माने वैल्यू न्यूट्रलिटी इन पब्लिक सर्विस ऊपर डिस्कशन कले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी ऊपर डिस्कशन कले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी माने ये कहवा कथा एडमिनिस्ट्रेशन इज सेपरेट एवं पॉलिटिक्स इज सेपरेट पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी ऊपर माने डिस्कशन करछन तापर को आसीबा हमर टॉपिक अछि तो फाइनली दे फोकस ऑन द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मींस वेलफेयर पॉलिसी जदि हम गवर्नमेंट रे देखिबा देन इट इज मेंशन्ड इन द डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 रो बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन वेलफेयर स्टेट यार बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन आर्टिकल 37 इट मेंशन होई कि नहीं वेलफेयर स्टेट 37 इज ऑल अबाउट वेलफेयर स्टेट ताले एनपीए पर रिफॉर्म हला पर आसुची मार्केट लाइक स्ट्रक्चर जाको हम एनपीएम कहूचे कोन कहली मार्केट लाइक स्ट्रक्चर जाको हम एनपीएम कहूचे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एनपीएम रो अर्थ कोन ये कहूचे गवर्नमेंट एटी प्राइवेट सर्विस प्राइवेट सेक्टर भलिया सर्विस प्रोवाइड करियो गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्विस लाइक प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्विस like private sector माने गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्विस लाइक प्राइवेट सेक्टर ना प्राइवेट लाइक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट सेक्टर रे हमको रेट टैपिज्म देखिया मिले हम पूर्व पढ़िले रेट टैपिज्म रो अर्थ कोन ना अधिक ऑफिशियल फंक्शंस टू मच ऑफ ऑफिशियल और ब्यूरोक्रेटिक फंक्शन ये कहूची ऑफिशियल बा ब्यूरोक्रेटिक फंक्शन को हमको चेंज करिवार अछि कुतरे ना प्राइवेट लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करिवार अछि लाइक हेल्थ एवं एजुकेशन दिल्ली रे जेमदी प्रोवाइड करा हला एटी असला एनपीएम कोन कहला हमें एटी असला एनपीएम तले एति की पॉइंट क्लियर जो पॉइंट ऊपर हम डिस्कशन करले जो पॉइंट ऊपर डिस्कशन करले क्लियर नियो पॉजिटिविज्म एनपीए एनपीएम एनपीएम क्लियर तापर कहूँ रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट मीन्स रिफॉर्म इन द गवर्नमेंट एफिशिएंसी बढ़ाया कहूँ कौन रिफॉर्म एफिशिएंसी को इंक्रीज करने कहूँ ताले हम एटी कौन कौन पढ़िले ना गोटे देखिले नियो पॉजिटिविज्म तापर देखिले हम एनपीए तापर देखिले हम एनपीएम तापर हम देखिले रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट तापर देखिले रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट क्लियर ताले ये कौन कहां पर बेस कला ना ये बेस कला केवल रूल ऊपर ओनली रूल्स ये कौन ना ये कहला वैल्यूज एथिक्स ये कहला प्राइवेट लाइक एडमिनिस्ट्रेशन रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट रिफॉर्म ऊपर रिफॉर्म इन द गवर्नमेंट सेक्टर नाउ क्लियर जेतो कम टाइम अछि ए वाले आंसर लिखियो एमती शॉर्टकट करके आपको लिखिक देखै परियो चलो रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट कहा ऊपर फोकस करछि ना यार मिशन कोन ना को सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स पब्लिक ऑफिस शुड सी सिटीजन एंड कस्टमर सिटीजन एज कस्टमर नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड कस्टमर सिटीजन किया और कस्टमर की सिटीजन किया और कस्टमर की ना सिटीजन जो मानकर परचेजिंग पावर अछि हैविंग परचेजिंग पावर
having purchasing power they are called customer. ताले सिटीजन नो परचेजिंग पावर नाही यार नीड टाको किए कैटर करिवो कहले मते गवर्नमेंट ना प्राइवेट सेक्टर जनकर किनिबार क्षमता नाही से मेडिकल जीवा को चाहूची प्राइवेट हॉस्पिटल जीवो अपोलो हाईटेक जीवो ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल जीवो कोडी जीवो सिटीजन नो नीड्स दैट इज कैटर्ड बाय द गवर्नमेंट कस्टमर कहा पाको जीवो ना कस्टमर जीवो प्राइवेट सेक्टर पाको कहा पाको प्राइवेट सेक्टर पाको ताले एटा में कोन देखिल ना ये कुछ सिटीजन मानन को कस्टमर बलिया बिहेवियर दियो कोडी किए बिहेवियर करिवो जेतरा हम गवर्नमेंट पाखु जाउचे कोनोसी सर्विस पई सेतेबेले ये कोन कहूची जेतरा हम गवर्नमेंट पाखु जाउचे गवर्नमेंट हमको कस्टमर बलिया बिहेवियर करिवो प्रीमियम कस्टमर बलिया बिहेवियर करिवो बुझियला कोन करिवो गवर्नमेंट प्रीमियम कस्टमर बलिया हमको बिहेव करिवो नॉट लाइक सिटीजन्स देन आउ गोटे पॉइंट ऊपर रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट फोकस करूची दैट इज इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी बढ़ाइबो केमति प्रोडक्टिविटी बढ़ाइबो इट इज ऑल अबाउट द क्वालिटी बिजनेस लाइक स्ट्रक्चर करिवो क्वालिटी को इंक्रीज करिवो क्लियर कोन कहलिटी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऊपर फोकस करा जाउची क्वालिटी को इंक्रीज करा जाउची बुझियला कि नहीं बुझियगला ओके तले हम आसिया वर्तमान करंट चैलेंजेस कोन एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स एति के कांसेप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो हमको बुझिया दरकार पबाड रो एति के कांसेप्ट हमको बुझिया दरकार एई पर्टिकुलर टॉपिक रे एथिक्स बुझिया पय हम जा कांसेप्ट दरकार बेसिक कांसेप्ट मु कहली बर्तमान देखिए व्हाट इज द करंट स्टेटस एंड चैलेंजेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स टा इवोल्यूशनरी डेफिनेटली कहीं कि ना आज ये कहूँ कि वैल्यू फ्री एडमिनिस्ट्रेशन काली कहूँ वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन तापन कहूँ आईक्यू नहीं काम कर तापन कहूँ ईक्यू लगाओ आईक्यू सहित तापन कहूँ गवर्नमेंट रे प्राइवेट भाया बिहेवियर कर तापन इवोल्यूशन होउछ यार चेंज होउछ हां कि नहीं ये ग्रेजुअली चेंजेस होउछ सो एटी ट्रांसपेरेंसी ओपननेस को प्रमोट करा जाउछि फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करा जाउछि राइट टू इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करा जाउछि पब्लिक सर्विस डिलीवरी को प्रमोट करा जाउछि सिटीजन चार्टर को प्रमोट करा जाउछि ताले एटी कोन कोन को पॉइंट ऊपर लिखिबे एटी फोकस करिए मु कहि दउछि को पॉइंट लिखिबा दरकार गोटेला ट्रांसपेरेंसी सिटीजन चार्टर जदि एटा परीक्षा रे आछि कोन कोन लिखियो फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन पब्लिक सर्विस डिलीवरी है दीज आर इंपोर्टेंट पॉइंट्स ताले एटी कोन कहले ट्रांसपेरेंसी बा ओपननेस को बढ़ाइबा ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाइबो सिटीजन्स चार्टर कौन कौन सर्विस दउचे हमर मिशन कौन हमर ऑब्जेक्टिव कौन हम ऑर्गेनाइजेशन ताको क्लियरली लिखिबा फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन सप्लाई करिवो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू इन्फॉर्मेशन आनियो पब्लिक सर्विस डिलीवरी करिवा टाइमली डिलीवरी क्वालिटेटिव सर्विस दो सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटर हिसाब रे आपन को बेसिक रिक्वायरमेंट कोन रहइबो ना ए पॉइंट गुडा करबो क्लियर एवडा को बेसिक रिक्वायरमेंट रहइबो हमर चैलेंजेस ताल कोन हम आसे ये क्वेश्चन पचरिबो कि व्हाट आर द चैलेंजेस करंट चैलेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहली प्रथम क्वेश्चन हला व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन अ पब्लिक सर्वेंट तापर हम देखिबा चैलेंजेस एठी हमको कोन कोन फेस करिया पड़ी प्रथम होची एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी यार अर्थ कोन एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी रो अर्थ कोन इट इज ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस फॉर ऑल हैला एफिशिएंसी इंक्रीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट मानकर इक्विटी फॉर ऑल देन कोऑपरेशन वर्सेस कंपटीशन हम कोन देखु ये कहूँ द चैलेंजेस फेस्ड बाय लोकल अथॉरिटीज इन एन एनवायरनमेंट वेयर दे आर एक्सपेक्टेड टू एम्युलेट द कॉम्पिटिटिव एज ऑफ प्राइवेट सेक्टर फार्म्स ताले किए कहा सहित कंपीट करिवो ना गवर्नमेंट सेक्टर टा प्राइवेट सेक्टर सहित कंपीट करिवो गवर्नमेंट टू कंपीट विथ प्राइवेट सेक्टर कौन करिवो ये गवर्नमेंट आटी प्राइवेट सेक्टर सहित कंपीट करिवो बुझियला कोउतरे ना एग्जांपल हम नबा हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करिवार एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करिवार सोशल सर्विस प्रोवाइड करिवार बा मु कहबी डायरेक्ट पब्लिक सर्विस डिलीवरी करिवार ये प्रोवाइड करिवार
तो 20th सेंचुरी हमको देखियो कोन मिलुची ना पब्लिक सर्विस इंक्रीज होची काहे ना बिकॉज ऑफ वेलफेयर वेलफेयर अर्थ होची सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जेहेतु सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रो डायमेंशन बढ़ुची ऑटोमेटिकली पब्लिक सर्विस डेलीवरी बढ़ुची पब्लिक सर्विस रा स्पेशलाइजेशन का डोमेन गुडा को मध्ये बढ़ुची फॉर एग्जांपल यदि हम देखिबा पब्लिक सर्विस रे कोन करची गवर्नमेंट कोन प्रोवाइड करची ना हेल्थ एजुकेशन रास्ता घाट पानी बिजुली ये सब देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एनपीएम लाइक स्ट्रक्चर हमको देखिया को मिलची बा रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट एटी हमको देखिया को मिलची रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट हमको एटी देखिया को मिलची सो दिस इज अ न्यू डोमेन कोन कहली इट इज अ वेरी न्यू डोमेन सेति ये कुछ क्वालिटी इंस्पेक्शन करबा दरकार कोन क्वालिटी इंस्पेक्शन करबा पई यू कैन अप्रोच अ थर्ड पार्टी एश्योरेंस बा थर्ड पार्टी द्वारा हमें क्वालिटी टा को चेक करि परिबा जेमती प्राइवेट सेक्टर रे क्वालिटी चेकिंग थर्ड पार्टी द्वारा हुए एक्जाक्टली ये कुछ पब्लिक सेक्टर रे मध्य हमें थर्ड पार्टी द्वारा क्वालिटी चेकिंग करि परिबा बुझियला बुझियला हो सर जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन देखुचे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखुचे ये ऑर्गेनाइजेशन गुडा को डेवलप केमिति हुन ये कुछ तीनटा वेव अछि तीनटा वे रे माने डेवलप होबे प्रथम फास्ट वेव जहाँ को प्री इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाए एठी एग्रीकल्चरल सोसाइटी मानकर इंपोर्टेंस अधिक रुए इंडस्ट्रियलाइजेशन हेनी ये होची ट्रेडिशनल सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स बा ट्रेडिशनल सोसाइटी बा ट्रेडिशनल सोसाइटी सेकेंड वेव रे हम कोन देखिया को मतलब ये को देयर इज सेंट्रलाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म कोन कहूची ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म सो एटी ऑर्थोडॉक्स बा ट्रेडिशनल सोसाइटी एग्रारियन सोसाइटी रा कमुची एग्रारियन सोसाइटी टा कोन होची ना एटी रिड्यूस होची हैना अर्बन पॉपुलेशन बढ़िबो रूरल पॉपुलेशन कमुची कोन होची रूरल पॉपुलेशन ग्रेजुअली डिक्रीज होची एठी ये कोन कहूची ना ये कहूची पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये पूरा मैच्योर सोसाइटी पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हे सारिची तामान दिस इज क्वाइट डेवलप्ड हैना ताला मैटी कोन देखले फर्स्ट और सेकंड थर्ड वेव फर्स्ट वेव सेकंड वेव थर्ड वेव फर्स्ट वेव दिस इज सेकंड वेव थर्ड वेव फर्स्ट वेव रे हम कोन देखिले ना फर्स्ट वेव इज द एग्रीकल्चरल सोसाइटी दिस इज प्री इंडस्ट्रियल स्टेज एटी इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं प्री इंडस्ट्रियल स्टेज नाउ सेकंड इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज है ना एठी कोन देखिया कोन दिस द पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज इंडस्ट्रियलाइजेशन है सारी ची बुझी पारले कि नहीं समस्त कोन तीनटा फेज मते तीनटा फेज बुझिले तले एठी माइग्रेशन अधिक एटी इंडस्ट्रियल स्टेज रे कोन होची ना एटी रूरल रु अर्बन माइग्रेशन हमको अधिक देखिया अर्बन पॉपुलेशन एटी इंक्रीज होची कोन होची अर्बन पॉपुलेशन एटी इंक्रीज होची हमको देखिया ये गला दिस इज द स्ट्रक्चर एबे हमें आसीबा को वैल्यूज हमको दरकार व्हाट आर द वैल्यूज व्हिच आर रिक्वायर्ड प्रथम ये कहूची इकोनॉमी रो अर्थ होची पब्लिक रिसोर्स रो इकोनॉमिक यूज इट इज ऑल अबाउट रिसोर्स एलोकेशन इकोनॉमी माने कोन दिस इज ऑल अबाउट रिसोर्स एलोकेशन हो कि नहीं गवर्नमेंट रिसोर्स रो प्रॉपर मोबिलाइजेशन और एलोकेशन मोबिलाइजेशन और एलोकेशन फेयरनेस इक्विटी दरकार कि नहीं फेयरनेस इक्विटी ऑनेस्टी करिया डेवलपमेंट करिया पई भाई ये ट्रांसपेरेंसी बढ़िया पई हमको फेयरनेस रा आवश्यकता अछि कोन कहली ट्रांसपेरेंसी बढ़िया पई हमको फेयरनेस रा आवश्यकता अछि इज दिस क्लियर ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज पई कोन दरकार रोबस्टनेस रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी यार अर्थ सस्टेनेबिलिटी मींस फॉर अ लॉन्गर पीरियड केमदि हम याको प्रमोट करि परिया है ना लॉन्गर पीरियड केमदि हम ग्रोथ रा को स्टिमुलेट करि परिया चलिए जो फाउंडेशनल वैल्यूज मानक ऊपर हम डिस्कशन कले व्हाट आर द चैलेंजेस कौन कौन एटी हमको प्रॉब्लम देखिया को मिलुची ना प्रथम कथा ला एम्फासाइजिंग गवर्नेंस सो चेंज हेची कोना गवर्नमेंट रु गवर्नेंस मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस हेची कोन हेची मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस यार अर्थ कोन
गवर्नमेंट रो अर्थ होची रूल रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। ये कुछ रूल रेगुलेशन हटे कि मैक्सिमम गवर्नेंस प्रोवाइड कर, यार अर्थ अधिक सर्विस दबो, मोर सर्विस लेस रूल एंड रेगुलेशन। कोलाबोरेटिव डिसीजन मेकिंग, स्टेट एवं प्राइवेट सेक्टर नॉन स्टेट सेक्टर मिसिकी काम करिवे, ये स्टेट एवं नॉन स्टेट सेक्टर एटी मिसिकी काम करिवे, जेमति कि प्राइवेट सेक्टर, सिटीजन, सिविल सोसाइटी, एनजीओ एमाने नॉन स्टेट एक्टर एमाने मिसिकी काम करिवे, ताको हम कहूचे एम्फासाइजिंग द गवर्नेंस। देन मार्केटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस, यार अर्थ ये कहूची मार्केट लाइक प्रैक्टिस ऑलरेडी डिस्कस कली, citizens to be treated as customer, citizen to be treated as customer, जोटा हम एनपीएम रे देखले कि नहीं वर्तमान कौन कहूँ ये कहूँ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन देयर इज द रोल बैक ऑफ द स्टेट, लासेस फेयर जहाँ को कहा जाउछि, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट। ताले स्टेट इंटरफेयर न कले किए इंटरफेयर करिवो, स्टेट इंटरफेयर न कले प्राइवेट सेक्टर इंटरफेयर करिवो, प्राइवेट सेक्टर इंटरफेयर कले एफिशिएंसी अधिक, यार क्वालिटी अधिक, प्राइवेट सेक्टर क्वालिटी अधिक एवं एफिशिएंसी अधिक, बुझीगला। आउ ये कौन कहूँ मार्केटाइजेशन ने न्यू मार्केट बेस्ड वैल्यू सिस्टम, कौन कहूँ मार्केट बेस्ड वैल्यू सिस्टम, मार्केट रो वैल्यू अधिक रहिबो, बुझो कि नहीं, ए दुटा पॉइंट क्लियर, लास्टेज फेयर एवं मार्केट बेस्ड वैल्यू। यस क्लियर, ओके। तापर देखा एजेंसिफिकेशन, यार अर्थ कौन, एजेंसिफिकेशन रो कांसेप्ट हमको ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया टाइप ऑफ कंट्री अधिक देखा मिले। यार अर्थ होची जो मिनिस्ट्री गुडा अच्छी, मिनिस्ट्री गुडा को ब्रेक कर दिया जाउची छोट छोट डिपार्टमेंट इनटू ऑटोनोमस एजेंसीज, कौन करा जाउची छोट छोट ऑटोनोमस एजेंसी रे आको डिवाइड कर दिया जाउची, सो इट प्रमोट्स लोकलाइजेशन, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन को ये प्रमोट करूची ना। छोट एजेंसी रे आको ऑटोनोमी दे देले प्रॉब्लम कौन हो, ऑटोनोमी दे देले एटी बजेट अधिक खर्च हो जाय, फाइनेंशियल एलोकेशन टा अधिक हो जाय, कौन कहले एटी फाइनेंशियल एलोकेशन एटी बढ़ी जीवो एजेंसिफिकेशन। देन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस, यार अर्थ कौन, सिविल सर्वेंट पॉलिटिकली न्यूट्रल हवा दरकार, सिविल सर्वेंट कौन हवा दरकार, पॉलिटिकली न्यूट्रल हवा दरकार, बट एमाने होउछन्ति कि ऑब्जेक्टिव कौन एमान कर बर्तमान, सिविल सर्वेंट मानकर ऑब्जेक्टिव कौन, टू जॉइन पॉलिटिक्स ना, ऑब्जेक्टिव होची टू जॉइन पॉलिटिक्स। देखो चाकरी छाड़ी के जन जॉइन करछन्ति, चाकरी थाई के जन पॉलिटिक्स रे अछन्ति डायरेक्ट टू जॉइन पॉलिटिक्स, ता माने एटी कहूचे हमें दिस इज आपको जे पावर हंग्री, कौन कह होची पावर हंग्री, क्लियर। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन अर्थ ये कौन कहूची, डिसेंट्रलाइजेशन अर्थ कौन, पब्लिक ऑफिसेस रो डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ व्हाट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसेस, कौन कहूची डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसेस। रिक्रुटमेंट एवं सिलेक्शन में चेंजेस लाइक लैटरल एंट्री, मझे गोटे आसला देखियो यूपीएससी रे लैटरल एंट्री, जो मानकर प्राइवेट एक्सपीरियंस अछि से माने एंटर करि परिबे। नाउ दैट विल इंक्रीज एफिशिएंसी आल्सो, दैट विल इंक्रीज एफिशिएंसी एज वेल। आईसीटी एंड ई गवर्नेंस, यार अर्थ यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ आईसीटी, सो गवर्नेंस प्रोवाइड करा जीवो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करी, जहाँ कहा जाए कौन ना ई गवर्नेंस, कौन कह जीवो आपको कह जीवो ई गवर्नेंस, है ना, बुझी गला। ताले हमें देखिबा पब्लिक सेक्टर एथिक्स 20th एवं 21st सेंचुरी रे ता भीतर कौन डिफरेंस, जो एथिक्स हमें देखुचे पब्लिक सेक्टर रे ता भीतर कौन डिफरेंस कोडी 20th सेंचुरी रे एवं 21st सेंचुरी रे, ए पर्यंत भाव समस्त क्लियर।
रूलिंग एलाइट्स किए थिले रूल किए करूला डिटरमाइंड बाय एलाइट्स जो माने एलाइट सेक्शन थिले जो माने ऊपर स्तर रे थिले ऊपर स्ट्रेटा रे थिले से माने ही डिसाइड करथिले रूल किए करिवो नाउ इट इज बाय 21st सेंचुरी रे बाय द अफेक्टेड पार्टीज माने एटी पब्लिक पार्टिसिपेट करछि बाय पब्लिक कॉमन एथिकल कोड कोन ना कुछ फाइनल सॉल्यूशन कोन ये कहा पर फोकस करछि ना ये कहछि मैनेजिंग कोर्स थ्रू कंटीन्यूअस ऑथेंटिक डिस्कोर्स कोन कहछि एटी पब्लिक पार्टिसिपेशन कथा कहछि सपोर्ट गारंटेड थ्रू कोएर्सन अर्थ ताको जबरदस्ती करा जाउतला 20th सेंचुरी ये कहछि कॉन्सेंसस माने कंसेंट दी जण राजी एटी कंसेंट ऊपर फोकस करा जाउछि एथिक्स फाउंडेशन कोन वेस्टर्न फाउंडेशन एटी एंथ्रोपोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल प्लुरालिज्म ता माने ये सोशल इंक्लूजन कथा कहछि सोशल इंक्लूजन अर्थ फॉर ऑल एटी कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी एटी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी ये कहछि पर्सनल मोरालिटी डिस्करेज एटी पर्सनल मोरालिटी एनकरेज पब्लिक इंटरेस्ट डिस्करेज एटी पब्लिक इंटरेस्ट एनकरेज दीटा भीतर डिफरेंस पचारि पारछे 10 मार्क डायरेक्ट बुझी गला डिफरेंस दीटा ना डाउट अछि जदि मते को दीटा जाक डिफरेंस क्लियर समस्त को दीटा जाक डिफरेंस क्लियर एवरीवन जो न बुझ परछ पचार तापर हम नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा हम तापर ताले मते एबे कुह को वैल्यूज दरकार सिविल सर्वेंट मानक पय को वैल्यूज दरकार सिविल सर्वेंट मानक पय मु कहि प्रथम वैल्यू दरकार दैट इज इंटीग्रिटी कौन दरकार इंटीग्रिटी यार अर्थ ना दिस इज साउंडनेस ऑफ मोरल वैल्यूज साउंडनेस ऑफ मोरल वैल्यूज यार अर्थ जो कहीं नहांती आम वैल्यूज गुडा को आम निजे प्रोटेक्ट करिया वैल्यूज गुडा को मानिबा एथिक्स को मानिबा दिस इज ऑल अबाउट adhering टू एथिक्स व्हेन यू आर अलोन adhering टू एथिक्स जेतो आम एका अच्छे एथिक्स को मानिबा तो कौन कहूचे ना दैट इज नोन एज इंटीग्रिटी बुझेला तले को टाइप रो इंटीग्रिटी दरकार ना इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी कौन कहली इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी इज रिक्वायर्ड सेकंड पॉइंट इज विजडम रो अर्थ विजडम दरकार कि नहीं गोटे पब्लिक सर्वेंट आम भी देखुचे कौन कौन व्हाट आर द फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस विजडम इज रिक्वायर्ड और नॉट यार अर्थ कौन विजडम रो अर्थ एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट भाबिबो एवं काम करियो बाय यूजिंग नॉलेज कौन करिकी बाय यूजिंग नॉलेज को यूज करिकी भाबिबार क्षमता काम करिवार क्षमता को विजडम कह जाए मते कोन एटा दरकार कि नहीं दरकार यस ताले एटी को विजडम दरकार हम ना गुड विल जस्टिस बिनोवलेंस कौन कौन दरकार गुड विल जस्टिस दरकार बिनोवलेंस नम्रता वेलफेयर इंक्लूजन डेवलपमेंट फॉर ऑल इक्वालिटी समस्त समान रूल ऑफ लॉ नो वन इज अबव द लॉ नाउ क्लियर कौन कौन विजडम दरकार हमको पूछेला
देन आउ का हम फोकस करि परिबा कॉम्पिटेंसी 3 नंबर पॉइंट कॉम्पिटेंसी एठी हमको डिसाइड करिया पड़े व्हाट टू डू केमिति करूचे ताकू हाउ टू डू हैला एंड व्हाट इज द रिजल्ट बुझेला कॉम्पिटेंसी रे कोन कहले छी व्हाट टू डू हाउ टू डू एंड व्हाट इज द रिजल्ट एटा को हम देखुचे कॉम्पिटेंसी नाउ सिविल सर्वेंट रा कॉम्पिटेंसी इज रिक्वायर्ड और नॉट सो दिस इज ऑल अबाउट द स्किल एज वेल एज एफिशिएंसी कॉम्पिटेंसी केमति मेजर करछे हमें स्किल कोन अछि प्लस एफिशिएंसी दिस इज इक्वल्स टू कॉम्पिटेंसी क्लियर कॉम्पिटेंसी कोन ये गोटे क्वेश्चन कोन कोन आसी परियो या भीतर देन आउ गोटे डिस्कशन करबा हमें डेडिकेशन बा डिवोशन टू ड्यूटी डेडिकेशन और मु कहबी डिवोशन टू ड्यूटी रिक्वायर्ड और नॉट डेफिनेटली रिक्वायर्ड डिवोशन टू ड्यूटी तार इनक्लिनेशन केते ड्यूटी करिवा पय काम करिया पय से लोकर केते इच्छा अछि पब्लिक वर्क करिया पय केते इच्छा अछि देन इज इम्पार्शियलिटी नेक्स्ट इज इम्पार्शियलिटी रे हम कोन देखुचे impartiality is all about merit of case this is about merit of the case से case रो merit केते तुमे लेबर ऑफिसर अछ तुमको लेबर कार्ड पई लोक आछन देखियोर अछि कि एक्चुअली द पर्सन इज द रियल बेनिफिशियरी और नॉट रेशन कार्ड दबार अछि देखियोर अछि प्रकृत रे से लोक बेनिफिशियरी कि नै इम्पार्शियल वे रे जजमेंट परिवार अछि हम केस रो मेरिट देखि के ताको जजमेंट दबार अछि बुझियला इम्पार्शियलिटी कोन डेडिकेशन कोन दीज आर द फाउंडेशनल वैल्यूज व्हिच आर रिक्वायर्ड आउ किछि निजे भी कहि परिबे मते नेक्स्ट आउ मोस्ट इंपोर्टेंट ऊपर डिस्कशन करिया को चाहू छी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी हां पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होबो कि नहीं पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नो इंक्लिनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी नो इंक्लिनेशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बुझिला नो इंक्लिनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी रे कोन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी देन ऑब्जेक्टिविटी 7 नंबर आउ कोन दरकार हमको दरकार ऑब्जेक्टिविटी बर्तमान मु डिस्कशन करछि फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस को वैल्यूज दरकार सिविल सर्वेंट मानक पाटे ऑब्जेक्टिविटी रे हम कोन देखुचे जहां भी डिसीजन नउची जहां भी एक्शन करूची ऑल द डिसीजंस आर एक्शंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन decision and action it shall be based on observation हैला कौन कहलिए कहां पर बेस करूची ना ये ऑब्जर्वेशन ऊपर बेस करूची आउ कौन दरकार हमको आउ दरकार टॉलरेंस 8 नंबर पॉइंट टॉलरेंस रिक्वायर्ड और नॉट फॉर अ सिविल सर्वेंट डेफिनेटली यूनियन बैंक रिजल्ट कोई परिबनी केबे आसे टॉलरेंस रो अर्थ कोन फेयर और ऑब्जेक्टिव कौन कहली दिस इज ऑल अबाउट फेयर एंड ऑब्जेक्टिव तक हम कहते टॉलरेंस आउ कौन दरकार हमको आउ दरकार एम्पैथी कौन दरकार एम्पैथी देन आउ कौन दरकार इमोशनल क्वोशेंट कपल्ड विथ इंटेलिजेंस क्वोशेंट दीटा देखो इमोशनल क्वोशेंट भी दरकार प्लस इंटेलिजेंस क्वोशेंट भी दरकार ए 10टा इंपोर्टेंट वैल्यूज ऊपर डिस्कशन कली जदि डाउट रहला मते पचार बुझिला हमने किछ अडी
क्लियर ताले आउ किछिटा इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर एटी डिस्कशन करूची रूल ऑफ लॉ बा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ रो अर्थ लॉ इज किंग लॉ इज सुप्रीम लॉ इज सुप्रीम यार अर्थ नो वन इज अबव द लॉ नो वन इज अबव लॉ whatever may be the position मतलब इकोनॉमिक स्टेटस सोशल स्टेटस social economic status whatever may be but no one is above the law सर ठीक है हेल्प ओपीएससी यूपीएससी केमिति हबो कोइ दन अरे दुर्गा या पर डिस्कशन मु करिछि अनेक जगह रे यूपीएससी ओपीएससी भीतर डिफरेंस कोन गोटे वीडियो अछि देख परिबे एटी पीडब्ल्यूओपीएससी चैनल ले पडिछि प्लस स्ट्रैटेजी कोन हवा दरकार बिगिनर माने केमिति पढिबे 6 मास पर्यंत केमिति प्रिपेयर हेबे मेंस पई केमिति पढिबे प्रीलिम्स पई केमिति पढिबे सब डिस्कस करिछि देखो गोटे थर जदि डाउट आसे मत पचारि बुझिला सबुठ इंपोर्टेंट एग्जाम क्वालिफाई करिया पई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस आंसर राइटिंग द्वारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आनो ऑप्शनल पढ होई जी तो एटी हम कोन देखले सुप्रीमेसी ऑफ लॉ रे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ रे हमें देखु जे लॉ इज सुप्रीम कोन देखु हमें एटी ना लॉ इज सुप्रीम no one is above the law whatever may be your position who position ना social status किछि भी हो जनकर इकोनॉमिक स्टेटस किछि भी हो धनी गरीब हो पॉलिटिकल स्टेटस किछि भी हो no one is above the law even law enforcing authorities like police department is not above the law judiciary parliament they are not above the law they derive their power from the constitution indian context जदि हमें देखिबा legislature executive judiciary एमाने कोन करंती ना they derive their power they derive their authority कुडु from constitution of india so constitution that's why constitution is known as the organic or the supreme law indian context this is the organic or this is the fundamental law कौन कहली this is the organic or this is the fundamental law बुझिला supremacy of law रे कौन लिखिबार अछि हम supremacy of law रे कौन लिखिबार अछि क्लियर लिखि दो okay the next is equality equality रो अर्थ all are equal because there is no special treatment no special treatment all are equal in the eyes of law it is equality but reasonable कौन सेटा हम कहूचे exceptions मध्ये एतरे अछि पडिथियो पॉलिटी रे पडिथियो सेटी एडा मु डिस्कस करनी exceptions are there like for underprivileged marginalized like मु कहबी SC ST OBC women ई जगह ये वाला equality then the next is sustainability कौन कहले हमें को द नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी तो सस्टेनेबिलिटी रे हमें कौन देखुचे ना सस्टेनेबिलिटी रे हमें देखुचे फॉर अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ बुझेला लॉन्ग टर्म ग्रोथ रे हमें कौन करूचे एठी कौन कहली दिस इज ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी इज ऑल अबाउट अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ नेक्स्ट इज इंक्लूसिव ग्रोथ inclusive growth रे हम कौन देखते growth for all those who are marginalized section of society
स्पेशली एससी मुझे एसटी ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वुमेन थर्ड जेंडर ये कहूँ ऑल ऑफ देम शुड बी इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंटल मॉडल कौन हवा दरकार all of them they should be included in the developmental model otherwise it will create inequality otherwise it will create inequality but disparity create over disparity create now disparity or inequality it is always a threat to democracy threat against the democratic values तो example आम देखा या LWE सृष्टि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म 1967 रे आसिला नक्सलबारी विलेज रे कोडी नक्सलबारी विलेज वेस्ट बेंगल आसला कहीं ना रिच आउ पोर भीतर ये गोटे डिवाइड बिटवीन रिच एंड द पोर जमींदार एवं लैंडलेस लेबर से मानक भीतर एटा स्टार्ट हला का भीतर कहली जमींदार एवं लैंडलेस लेबर एमानक भीतर स्टार्ट हला ना मते कोंतु जदि क्वेश्चन आसे वैल्यूज मानक ऊपर समस्त लिखि परिबे ना लिखि परिबे क्विक जदि वैल्यूज मानक ऊपर क्वेश्चन आसे लिखि हो कौन कौन पढ़िला आमे एपर्यंत कौन डिस्कस कलानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने आमे देखिले एटी डेवलपमेंट रे देखिले एटी कौन कौन को फेज रे डेवलपमेंट ये होउची प्रथमे आमे देखिले नियो पॉजिटिविज्म रे फोकस होउची कहां पर ना रूल मानक ऊपर एनपीए रे वैल्यू एथिक्स को फोकस करा गला तापर आसला एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जोटी प्राइवेट लाइक एडमिनिस्ट्रेशन देन रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट जोटी रिफॉर्म ऊपर फोकस करा गला क्लियर क्लियर एई पार्ट ये गोटे क्वेश्चन आसीबो ये गोटे क्वेश्चन आसी परिबो देन तापर हम डिस्कशन कले एनपीएम रो फंक्शन कोन रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट जे दीटा जिंस ऊपर फोकस कला आर मिशन होउची कस्टमर नीड्स को सैटिस्फाई करिया पब्लिक ऑफिस रे सिटीजन को कस्टमर भलिया बिहेव करिया प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करिया ये दीटा इंपोर्टेंट पॉइंट हैला देन एडमिनिस्ट्रेशन को करंट चैलेंजेस कोन करंट चैलेंजेस कोन ना एटी मु लिखि ट्रांसपेरेंसी ओपननेस सिटीजन चार्टर information from the government like right to information हेगला freedom of information हेगला public service delivery timely एवं qualitatively delivery हेगला public service for all the citizens public service is for all citizens cooperation competition these are the challenges तापर हम देखले ऑर्गेनाइजेशन गुडा केमति डेवलप करछंदी ना प्री इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जोडा का एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बा एग्रीकल्चरल सोसाइटी इज देयर अंडर डेवलपमेंट सेकंड वेव रे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन देखियो मिलला थर्ड वेव रे हमको कौन देखियो मिलला थर्ड वेव इज ऑल अबाउट पोस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तापर हम फाउंडेशनल वैल्यूज देखिले को वैल्यूज ऊपर डिस्कशन कले एटी ना गवर्नेंस को एम्फासिस करबा रिसोर्स मोबिलाइजेशन ट्रांसपेरेंसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एवं सिलेक्शन चेंजेस ई गवर्नमेंट देन आउ को वैल्यूज ऊपर डिस्कशन कले व्हाट आर द फाउंडेशनल वैल्यूज ना इंटीग्रिटी रो अर्थ होची एथिक्स को मेंटेन करबा एथिक्स को मानिबा के नथिला बेले एथिक्स को मानिबा विजडम रे हम देखिले गुड विल जस्टिस बेनेवोलेंस वेलफेयर इंक्लूजन इक्वालिटी रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करबा जस्ट विजडम रो अर्थ होची एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट बाय यूजिंग नॉलेज को यूज करी भाबिबा बा काम करबा को विजडम कहा जाय 3 नंबर पॉइंट रे हम देखिले कॉम्पिटेंसी स्किल प्लस एफिशिएंसी मिसेले कॉम्पिटेंसी बढ़े व्हाट टू डू हाउ टू डू फॉर हुम टू डू व्हाट इज द रिजल्ट 4 नंबर पॉइंट रे हम देखिले डेडिकेशन फॉर वर्क गोटे लोकर डेडिकेशन केते अछि सिविल सर्वेंटर काम करबा पय इम्पार्शियलिटी हम देखु जे पार्शियलिटी करबानी काहा को व्हाट इज द मेरिट ऑफ द केस जे पाइबार योग्य दोज हु आर द डिजर्व से माने ही पाइबे डिपेंडिंग ऑन मेरिटोक्रेसी टॉलरेंस में कौन देखुचे फेयर एंड ऑब्जेक्टिव वाले ताको टॉलरेंस कहउचे एम्पैथी इमोशनल क्वेश्चन एवं इंटेलिजेंस क्वेश्चन ता मिसी के रहउथि देन आउ किछि वैल्यूज को इंपोर्टेंस देबा दरकार लाइक सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इज सुप्रीम देयर इज नो वन अबव द लॉ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन किछि हो इक्वालिटी ऑल आर इक्वल देयर इज नो वन स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं का then हमें देखिले inclusive growth this is growth for all especially for the marginalized section of the society
है इके ना एससी एसटी ओबीसी माने देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहले एनवायरनमेंट ऊपर हैविंग लेस इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट इज दिस क्लियर ना डाउट हॉलोकॉस्ट और मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट ये दुटा इंपोर्टेंट पॉइंट अछि एटा जेतरा हम नेक्स्ट ई टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा सेठी कहि से पार्ट रे डिस्कस करी ताले क्वेश्चन लिख परियो समस्त या पर जो दु तीनटा क्वेश्चन हम डिस्कस करले एवरीवन जदि डाउट अछि पचारन जदि डाउट अछि पचारन ताले कोन पढिले हमें देखिले वैल्यूज इन सिविल सर्विस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज ऊपर हम डिस्कशन कर तो जो माने प्रॉपर्ली हाँ क्वेश्चन लिखि दो ठीक है दे दो स्वप्न जो माने प्रॉपर्ली प्रिपेयर होचंती से माने एडिटोरियल पढिबे एडिटोरियल टा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल अछि ए चैनल रे लास्ट वी मंथ रा आसीतला मंथली गोट थरा आसुची ए मासर मध्ये आसीबो फेब्रुवारी मासर मार्च फर्स्ट वीक रे आसीजिवो ताको पढिबे मार्च फर्स्ट वीक एडिटोरियल इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दो चेटी स्वप्न discuss foundational values in civil service required in civil service explain 5 attributes of public administrator which are mandatorily required next explain evolution of public administration in current scenario हेजिवो हेजिवो एटा समस्त डाउनलोड करि परिबे डाउनलोड करके पढिबे ठीक अछि ठीक अच्छी then that's all for this session we'll discuss more in the next class thank you पढ़ी के आसीबो समस्त नेक्स्ट क्लास को स्वप्ना स्नेहा